Hello everyone, welcome to my channel Economics by Dipankar. So in today's video, we are going to discuss about how to calculate the number of firms operating in the long run. Number of firms operating in the long run. Okay. सो इसमें यूजुअली तो हम लोग इसी को कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस. सो यूजुअली थिंग्स दैट गिवन इज एक आपको जो है कॉस्ट फंक्शन दे दिया जाएगा, कॉस्ट फंक्शन, और इसी के साथ जो दूसरा चीज़ आपको दे दिया जाता है वो है इंडस्ट्री डिमांड या मार्केट डिमांड. तो इसमें भी आपको इंडस्ट्री डिमांड दे दिया जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू गिवन इंफॉर्मेशन हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है कि इन द लॉन्ग रन हाउ मेनी फर्म्स आर ऑपरेटिंग. So, for example, let's take an example, and this question was asked in JNU 2021. JNU 2021. So, what we have planned is that through multiple videos, we'll be providing how to solve numerical questions. क्योंकि एक चीज़ जो हम लोगों ने मैक्सिमम देखा है, स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कतें आती है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन को लेकर, या फिर जनरल इक्विलिब्रियम, जो भी टॉपिक्स होते हैं सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो जेन्यू में जो क्वेश्चन आ गया था तो इसमें कॉस्ट फंक्शन था. कॉस्ट फंक्शन, द कॉस्ट फंक्शन वाज C इक्वल टू q to the power 3 or q cube minus 10q square plus 35q. ये कॉस्ट फंक्शन था. और इंडस्ट्री डिमांड इक्वल टू 2500 minus 200p. So P is equal to price and Q is equal to quantity produced. Quantity produced. So the question was asked, if the firms are maximizing profit, find the number of firms in the industry. Number of firms in the industry. So basically in the long run हम लोग को calculate करना है कि according to this cost function, तो basically what we know is the cost function is the same for all the firms. और ये जो demand है, this is not the demand for individual industry, this is the individual firms, this is the demand for entire industry. ठीक है. So what do we know about, let's say, the firm behavior in the long run? अगर इसको हम लोग प्राइस ले लेते हैं, इसको हम लोग क्वांटिटी ले लेते हैं. ऑन द horizontal axis and vertical axis पे we have taken price. So if this is your average cost, so we know that the marginal cost will cut the average cost at the minimum point. So suppose we take this as, so your marginal cost will rise like this, and this will be the price level. This will be the price level P star, and this is going to be the quantity produced star. Okay. So in the long run, since all the firms are maximizing profit and there is perfect competition, average cost will be equal to marginal cost equal to price. So ये एक कंडीशन है जो हमेशा फुलफिल होगा.
So based on the given information, now we have to calculate कि number of firms क्या होगा. So how do we proceed? So let's write again जो दो इक्वेशन दिए गए हैं. C is equal to, we know that Q minus 10 Q square plus 35 Q. और इंडस्ट्री डिमांड जो दिया गया है वो है D इक्वल टू 2500 माइनस 200 P. सो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया एंड दिस इज इक्वेशन 2. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट इज एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय Q. सो दिस इज यूज टोटल कॉस्ट. सो इसको इस इक्वेशन को सिंपली टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट वी विल डिवाइड दिस बाय Q. सो Q माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 35Q divided by Q. So what we are going to get? Q square minus 10Q plus 35. So this is our average cost curve, average cost का equation. The next thing that we need to do is find the marginal cost. So MC, so we will have to take the derivative of total cost with respect to a Q. So this will be this Q. So अगर मान लीजिए हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं for this equation. So since the power is 3, so this will be 3Q square minus, since this is again power square, so this will come over here. So 10 into 2Q, or this will be plus 35, or we can write this as 3Q square minus 20Q plus 35. So ये हम लोगों का आ गया, and this is the equation for marginal cost. ठीक है. The next thing that we need to do, अब देखिए हम लोगों का जो है marginal cost आ गया है, and from the conditions that we discussed over here, your marginal cost should be equal to the average cost at the, because why? Because marginal cost curve is going to cut the average cost curve at the minimum point. So the next thing that we need to do is that we need to equate average cost with marginal cost, or average cost is equal to marginal cost, or Q square minus 10Q plus 35 इक्वल टू, ये चीज हम लोगों को इस इक्वेशन से इक्वेट कर देना है, 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 35. ये हो गया. सो दिस विल कैंसिल इट आउट. अब इस Q को विल टेक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस Q ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, so what we are going to get, 20Q minus 10Q is equal to 3Q square minus Q square, or 10Q is equal to twice Q square. So this gets cancelled out, or 10 is equal to twice Q, or from here we can say Q is equal to 5. So this Q is equal to 5 means this is the Q that we got over here. So it's not the total quantity produced, but then this is the quantity produced by each firm. Quantity produced by each firm. Okay, this is the quantity produced by each firm, and by putting this Q in, let's say MC, we are going to get the price.
क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है लॉन्ग रन में प्राइस इक्वल टू MC मार्जिनल कॉस्ट होता है. So what is our MC? 3Q square minus 20Q plus 35. Let's rewrite 3Q square minus 20Q plus 35. So इस इक्वेशन में let us replace Q equal to 5. So क्या हो जाएगा? 5 square minus 5 plus 35. Or what we are going to get? This is 25 into 3, 75, minus 20 into 5 is 100, plus 35. So what we are going to get? 75 plus 35 is 110 minus 100, or P is equal to 10. So हम लोगों का प्राइस निकल कर आ गया P equal to 10. Now what is the market demand? So the next thing that we need to calculate is what is the total number of demand at the price 10. So हम लोग का जो मार्केट डिमांड का इक्वेशन है D equal to 2500 minus 200 P. So we are going to replace this P by 10, or we are going to get 2500 minus 200 into 10, or D is equal to 500. So at price P, the total industry demand is 500, and we have already calculated the quantity produced by each firm Q is equal to 5. This is the quantity produced by each firm. And we know that each firm is going to produce the same number of quantity. So when we can say quantity produced by each firm is 5 and total demand is 500. So number of firms is equal to 500 by 5 is equal to 100. So total number of firms operating in the long run is 100. So this is how you are going to solve the question. अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है to calculate the number of firms operating in the long run, जहाँ पे आपके पास cost function दिया गया है और industry demand function का equation दिया गया है. So let me repeat the things that we should do. सबसे पहला आपको क्या करना है? The first thing that you need to do is cost function से आपको एवरेज फंक्शन निकाल लेना है. ये हम लोगों का पहला चीज़ है. जब कॉस्ट फंक्शन दिया गया है तो कॉस्ट फंक्शन से वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट. So this is the first thing that we need to do, and this is all you need to do is simply divide the equation by Q. The second thing that you need to do is calculate the marginal cost, and so you have to take the derivative of cost function with respect to quantity. Once you have calculated that, the third thing that you need to do is that you need to equate average cost curve with marginal cost curve. Once you equate this is going to give you the quantity produced by each firm, which is Q. The Q that you are going to get is not the demand wala total demand, but then the quantity produced by each firm. क्यों quantity produced by each firm? Because we are equating the average cost with marginal cost. So that the point where the point that we get is, this is the point that we are going to get. So all this says it at price this with respect to average cost and marginal cost. This is the quantity which is going to be demanded by produced by each firm. So जब आप ये दोनों की इक्वेट कीजिएगा, so you are going to get Q is equal to जो भी आपका वैल्यू आता है based on the equations that we get. And once you get this equation, all you need to do is in the fourth step
यूनिट आप मार्जिनल कॉस्ट में वो जो है, जो आपको क्वांटिटी मिला है वो पुट कर दीजिए, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट द प्राइस। सो इसको इक्वेशन को पुट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा ना, दैट एट द गिवन क्वांटिटी व्हाट इज द प्राइस। ठीक है, once you get the price, the fifth step is with respect to price you can get the industry demand। ठीक है, so this is fifth। और जब आपको इंडस्ट्री डिमांड मिल जाता है टोटल 500, मान लीजिए इस इक्वेशन में हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, सो आपको इंडस्ट्री डिमांड मिल गया, एंड वी नो दैट इन द लॉन्ग रन ईच फर्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। So all you need to do is divide the total quantity demanded by quantity produced by each firm, and you will get the number of firms. So this is your step 6. So you can calculate the number of firms by following all these simple steps। ठीक है, so हम लोगों ने ये प्लान किया है कि we are going to calculate various numericals and upload on the YouTube channel so that you can watch, and अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लें। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ like the video, and if you have not subscribed the channel till now then please subscribe us। And again, if you need any kind of information or help with respect to your preparation, you can give us a call or WhatsApp us on 844-887-8849। You can also, if you need previous papers for various universities like JNU, SAU, Delhi University, Jamia Millia Islamia, BHU, Hyderabad Central University, ISI, CDS, Center for Development Studies, then please let us know and we'll share the question paper। So एक बार आप लोग अगर ये नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन, सो दैट आप लोग आने वाले टाइम में, अगर मान लीजिए इफ सच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन लेट से साउ एग्जाम और JNU or DSE, you can quickly solve these questions। So thank you and all the best।